ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवकंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्यते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिं करताले वेणुकरे कनकवरं सर्वाङ्गे हरिश्चन्द्र सुललितकण्ठ च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितोऽहं गोपालकृष्णचूडामणि या कुन्दे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत पुराण मधले 12 स्कंध। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचमम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तमम स्कंद, अष्टमम स्कंद, नवमम स्कंद, दशमम स्कंद, एकादश स्कंद, 12 स्कंद। श्रीमद्भागवत नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धायुक्तं मम सन्तोषकारणं। यत्र यत्र भवेत् पुण्यशास्त्रभागवतो कलो तत्र तत्र सदैवः भवामः त्रिदशैः श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आरोग्यं पुष्टतं पठन्तं श्रवन्तं वापि सर्वपापे प्रमुच्यते। यः पठन्ते प्रयत नित्यश्लोक भागवतसुता अष्टादशपुराणं फलं व्याप्नोति मानवः। वस्त्रात् अलङ्कारेण पुष्पं धूपदीपोपहारके वशीकृते ह्यन्तेषस्तस्नीया सत्यपतियथाः। श्रीमद्भागवत पुराणाचे श्रद्धेयुक्त अंतःकरणाने श्रवण करावे। श्रीमद भागवतातील श्लोकांचे केलेले वाचन हे 18